टाइप्स मोस्ट आइकॉनिक टाइप्स में से एक है। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग वही करने वाले हैं पोकेमॉन सनफ्लेयर वर्जन में। क्या हम लोग पोकेमॉन सनफ्लेयर को सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग टाइप से बीट कर पाते हैं या नहीं। और भाई ये होने वाला है एक हार्डकोर नज़लॉक, जो कि भाई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। मतलब मैं हार्ड मोड तो नहीं सेट कर रहा भाई, बिकॉज वरना फिर भाई गेम ख़त्म, भाई ख़त्म, टाटा गुड बाय। और भाई साहब मुझे अपना फेवरेट नेम रखा था फॉल्कनर, बिकॉज भाई वही एक ये है जिम लीडर जो कि फ्लाइंग टाइप यूज़ करता है। विनोना भी है पर मैं बॉय हूँ ना। और अपने राइवल का नाम मैंने रखा एलटी सर्ज, बिकॉज भाई वो हम पे भारी पड़ने वाला है। तो भाई यार ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ में करता रहता हूँ। और हाँ, फ्लाइंग टाइप्स किसके फेवरेट है? यूवान के। तो भाई यूवान, तुझे तो ये वीडियो देखना ही है अपने भाई के लिए। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। भाई पूरा स्पेलिंग लिख नहीं पाया तो मैंने LT सर डॉट लिख दिया, मतलब समझ रहे हो ना आप। और ऑफकोर्स गाइज फ्लाइंग टाइप में तो हम लोग रॉलेट को ही चूज़ कर सकते हैं। और हाँ गाइज, हम लोग रॉलेट को इवॉल्व नहीं कर सकते फुल्ली, बिकॉज डिस्सीडुआई ग्रास और घोस्ट टाइप है, जो कि भाई अपने लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रॉलेट को पिक करने के बाद मैंने उसको क्या निकनेम दिया पता है आपको? जल्दी जल्दी सोचो कमेंट करके बताओ। ऑफ कोर्स मैंने उसको निकनेम दे दिया क्विल। और भाई राइवल तो लिटन ही पिक करेगा। और भाई हमने सीरियसली अपने राइवल LT सर्च की पूरी लिटन को वीप कर डाला यार। और अपना पहला पोकेमॉन जो मैंने पकड़ा फ्लाइंग टाइप नज़लॉक के लिए वो था अपना स्पीरो। और भाई स्पीरो भाई अपना नॉर्मल निकला, और पहले वाला इनकाउंटर में पकड़ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सेकेंड बार उसके ऊपर क्लिक करा ताकि वो आ गया। और फिर मैंने इसका निकनेम क्या रखा? सोचो एक फीरो के लिए स्पेशल नेम फाल्कन। गाइस यार मैं हार्डकोर नज़लॉक नहीं, अब नॉर्मल गेम खेलेंगे हम लोग, बिकॉज हार्डकोर नज़लॉक तभी खेला जाता है जब एक्सपीरियंस होता है। And guys, you may have guessed it right. Our new Pokemon Canary started to evolving at level 14, and in this game the first gym is of normal types, and we have Rock Smash, so you must have guessed it right. So let's just jump into the battle. The first gym leader is Hanabi, and her first Pokemon is a Taurus, and my first Pokemon is my Trumpik. So what I do is I first go in for a Rock Smash, hit it as hard as possible, but the Taurus's defense falls down, but the Taurus uses Cherry Face, so my speed goes down. Then I go for another Rock Smash, but before that I get hit with a Horn attack, and after hitting the Rock Smash, Canary gets to live, I guess. That's what I thought, but this is not a Nuzlocke, I told you guys before. I hit it once again before going down to another Horn attack. That brings in Taurus in the yellow, so I bring in Quill and just hit it as hard as possible with a Razor Leaf, but I get hit with an attack of that which brings me on 10 HP, but I grow to level 15 just tanking the hit. Next Pokemon is a Cubone, and I have a counter to it, Razor Leaf, because Cubone is weak to water, so it's a ground type. That's what I predict. I'll Quill live on 4 HP, but after defeating the Cubone, we received our first gym badge. और गाइस कहते हैं ना, जिसके पास वो स्टार ली तो उसने बाजी मार ली। जी हाँ, हम भी बाजी मारेंगे भाई। और भाई स्टारली अगर बाजी मारता है तो भाई स्टारली को भी तो कुछ अच्छा नाम होना चाहिए ना। सोचो मैंने उसका नाम क्या रखा, बहुत ही क्यूट सा नाम रखा है भाई, स्टार। एंड भाई क्विल अपना लेवल 17 तक पहुंच जाता है। सो नाउ वी हैव अ डार्ट्रिक्स, जो कि भाई टीम के अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये हो गया एक फाइनल एवोल्यूशन, बिकॉज जैसे कि आप लोग को मैंने पहले बताया था, डार्ट्रिक्स को हम लोग इवॉल्व नहीं कर सकते। और अपना स्टार और अच्छा स्टार बन जाता है, ब्लूमिंग स्टार। जी हाँ, स्टारली इवॉल्व हो जाता है और अपने पास आ चुका है एक स्टरेविया। एंड गाइस जब कर भला तो हो भरा, तो मैं मैजिक कप भी ले लेता हूँ अपने लिए, बिकॉज भाई gyarados भी। Well then guys, I reached Mount Moon, but before that I grinded up some Pokemon. Before going to the Mount Moon, Rian evolved into Fletchinder, which was a great addition to the team. And Orville evolved, so now we have 2 buffed up teammates. So I was very glad for this. We could get another encounter over here, which was Zubat. Luckily guys, I found a shiny one. Well guys, after reaching over here, I grinded up all my Pokemon up to level 22
After that, guys, Elevar evolved, and now we have a Swallow on the team. Isn't that pretty cool, I guess? Well then, guys, here the next gym leader was Lana, and Dartrix's grass type, so you may have guessed that right. So the battle starts off. Lana's first Pokemon is a Poplio, so I lead off with Dartrix and hit it as hard as with a plug. And it was a crit one hit. Next up was Lapras, and it was super effective on the team. I decided to risk out my life, पर मुझे पता था इसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं. But still, guys, I had full faith in Quill. Quill got confused, but still, it got hit with a pretty hard ice shard. And bro, Quill used Razor Leaf, and that was a 2-hit KO. Lapras was out of the way. For Dragonair, I swapped into Star to see as if he was actually a star, and as I predicted, it got hit with a Dragon Wing attack, paralyzed me with the what Thunder Wave, yeah, and it attacked me with Twister twice, and I hit it with another Wing attack before getting hit with a Twister, and that was a crit, and we won the battle. Good job, Star. You're actually a star. Then we have a close call with LT Surge. His first Pokemon was a Zubat, so I swapped in Ryan on the team. And Zubat used a Supersonic, which made us to become confused, but I then tried to hit with an Ember. I hurt myself in the confusion. He hit me with Bite, but then I hit it with an Ember. And he was about to faint, and my Flame Body burnt him. That's what I wanted. That's my ability, guys. Because of me getting hit in the confusion and he getting crit one shot in the burn, we got some experience. And LT Surge's next Pokemon was a Bulbasaur, so I swapped into Orville. And I hit it with a Gust, struck it with another Tackle, and defeated it. Not with Orville, I struck it with Elevar because Orville fell off asleep. After getting rid of the Bulbasaur, his next Pokemon was a Sneasel, who I was pretty scared of, but I had faith in Ryan because Ryan was pre-fire and it was a sure hit KO. Sneasel was out of the way, and now his next Pokemon was a Porygon. I swapped into Star and hit it with a Wing attack, but that didn't do anything almost. It did a decent amount of damage, but then its attack rolls grew up. I got scared, I hit it with another, and I won the battle. After that, I bet up the Nugget Bridge. Here I could get one more encounter, which was a Caterpie, which was pretty good. I evolved King into Gyarados. After that, then I evolved a new teammate called Kenny, which I catched in the grass into Metapod. And in order then to Butterfree, which was pretty cool. So now we can use Kenny, Gyarados, and another Pokemon, which is Weedle, so whom I evolved before. I couldn't show it, sorry guys. Then I met Bill, and then I just helped him, and I got the SS ticket. After reaching Vermilion City, I got a trip card. And now you guys know what's the big threat, the electric type gym. So I grinded up each and every point of my Pokemon at level 45, as that was the main threat. After reaching at level 28, Canary evolved, so now we have a Toucannon on the team. So guys, after grinding up a bit more, Orville evolved, and now we had a Pidgeot, which was a buffed up advantage for the team. After that, guys, Staravia evolved, and now we had a Staraptor on the team, which was superlatively awesome. After reaching level 35, Ryan evolved, and now we have a Talonflame. Next up, I started my gym battle with Pokemon trainers, so Focals, who had a Togedemaru. So I was pretty scared for it, so I swapped my Pokemon into Talonflame. It paralyzed me with a Thunder Wave. I tried to go on with a Flame Charge. It goes for charged, and then I just tried to hit it with hoping for God, and I was paralyzed, so I couldn't do so. Then I again started Charge Power. I then decided that I will hope in God, and God gave me the truth. Krishnaji to Mahano, and next up was Ampro, so I swapped into Orville, but it Mega evolved before I could do anything.
And is this a Mega Evolution or the normal one? I hit it with a wing attack, it was not effective. It tried to go for Cotton Spore, it missed it, and I hit another one. But then it hit me a Cotton Spore, which really affected my speed. But then I could easily defeat him. And then next Pokemon was a Matang. For the Matang, I swapped into Ryan and just hoped for something. I hit it with a Flame Charge and it was a one-hit KO. So we won our next gym badge. If I was a bit more underleveled, I would have lost. After that, guys, I reached Celadon. After that, I challenged the gym over there, but the gym leader was Ace Roller, and I was not so sure about this. So the battle started off, and I hit it with a Sucker Punch, and a Mimikyu went off. I gained some experience. Next up was Del Mise, who was pre-Ghost and pre-Grass, so a Pluck, I guess, could do the job. Yup. Last but not least was the Gengar, so another. I defeated Gengar, but my footage lagged, so I couldn't show. Then I got HM. Then guys, I reached Fuchsia City. Before going to Fuchsia City, I go back to Lavender and fight against Brendan and sweep his entire. After sweeping Brendan, however, I have to sweep LT Surge on. Then I found out the best Pokemon that I could. That's right, it was a Yveltal. Well, then I got a Silph. Then I met up with Flare Boss Lysander. I didn't even know that this is Team Flare here, so I was still. Anyways, his first Pokemon was a Camerupt, so I had to swap in my Pokemon into Oval in order to get the disadvantage out of there. But the Camerupt went in for Rock Slide, which was 4 times super effective. Still, I could hung out and I hit it with a wing attack. Then I got hit with a takedown, struck it with another wing attack, and at the end. Next up was his own Tutinator, which I was super scared about, but then I brought in Ryan to handle him. Ryan had a superlatively good encounter with flying types till now, so I hit it with an Acrobatics, and then I got hit with a Flamethrower, which didn't do anything, and then I just finished the job with another one. His next Pokemon was a Salazzle, so I swapped into Staraptor and just hit it with a close combat as fast as I could. But it wasn't very effective, and because of that, I couldn't take him out. But then a Brave Bird could do the job. And the next Pokemon was none other than his own Charizard. And if we get this encounter on the Victory Road, we are gonna kill it, baby, against their Elite Four. That's what I thought, but his Charizard was a 40 level and his Mega Stone Y could react, but it didn't Mega Evolve. A Drill Peck could do the job, and after getting the Silph Scope, I saved Mr. Fuji and I added Y and King to the team. After bringing Mr. Fuji back to his home, he gave us with that a Poke Flute. So now we could go through Fuchsia City. So when I reached Fuchsia City, then guys, I met Malo, the 5th gym leader, and she only had one Pokemon, which was a Steenie. So it was pretty easy to claim the next gym badge, wasn't it? Okay, yeah, it was. Leave it, 1 sec. After I defeated Malo with 2 wing attacks, and she's spamming desperately for Hyper Potion, I got my 5th gym badge. And then I got HM. Well, then I reached Saffron City, not without getting. Then I went to the Silph because there was no one in the gym and the gym was closed. Then I fight against Flare Boss Lysander again. This time he has 2 Pokemon, one being his Camerupt. So I hit it with a wing attack. After Pidgeot faints, I hit it with a Surf and take him out in 1 hit. And next up is his Turtonator, and this Turtonator shares the same fate like his other Pokemon. After that, I defeat the Team Flare Boss Lysander, and then I come back to Saffron City. Then, well, I reached Cinnabar Island. Before that, I challenged the gym leader, actually. And guys, surprisingly, the gym leader is Lily and her Ice type. So the battle starts out, and her first Pokemon is a Vulpix, so I swapped into Ryan, and I got a bit of hit with an Aurora Beam.
Anyways, I hit it with a heat wave and there goes the Vulpix. The next Pokemon is none other than Lapras, so I swap into Quill to hit it as hard as I hit it with a Gracium Z and it goes away. Her next Pokemon is none other than a Butterfree, so I stay in, hit it with a Pluck, but before that it goes for a Rage Powder and it becomes the center of the attention, but then it gets a crit one. Next up was Altaria, so I swapped into King and you know what happened? I'll show you guys. I hit it with a Waterium C move, which was pretty good and it stood off, so I tried to do some damage, but it went in for Dragon Dance, so I hit it with a two Surge and one Hyper Beam and out of here. So next up was a Clefable, so I swapped into Orville and the Clefable was of level 43, but then I hit it with a wing attack. Its cute charm inflated me and it's a crit one shot over there. And then I go to Cinnabar Island. Then guys, I got the secret. Then I fight with Kia with the 7th gym leader. And his first Pokemon is a black Charizard. That's cool, isn't it? Yeah, that's cool, guys. And I guess... Then guys, I hit it with a Hydro Pump and my sister was screaming for God knows what reason. So let's continue यार. और यार मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दैट ये 2 हिट. और भाई साहब इसका अगला पोकेमॉन एक टॉरस था. भाई फायर टाइप जिम में तुम टॉरस को कैसे ये ला सकते हो यार? कुछ भी मतलब क्या लॉजिक हुआ इस टॉरस का? कुछ भी यार, कुछ भी सच्ची बता रहा हूँ. पर फिर भी यार मैंने डार्क पल्स मारा और वो फेंट हो. और गाइज यार पता नहीं ये लोग मेरे साथ मस्ती क्यों कर रहे हैं, ये वीडियो बनाने नहीं दे. और गाइज इसका अगला पोकेमॉन था एक मैगमर, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था. तो देखते हैं इसके साथ कैसे लड़ाई हुई मेरी. तैयार ना होने के बावजूद भी वन सर्फ कुड डू द वर्क. हिज नेक्स्ट पोकेमॉन वाज भाई एक हॉर्नडूम. तो भाई मैंने पोकेमॉन चेंज नहीं किए और उसने स्नैच करने की कोशिश की, पर मैंने एक सर्फ में ही उसका, तुम लोग जानते हो ना क्या हुआ. हे यार फकनर, क्या तुम मुझे वन आइलैंड पे मिलोगे? देखो यार मैं नहीं आ सकता अभी. क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना सिखाओगे? पागल हो क्या? चलो निकलो यहाँ से. ठीक है जाता हूँ. अगली बार मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा. गाइस पता नहीं बिल की कौन गर्लफ्रेंड है. गाइस आई आस्क्ड युवान कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो. तो पता है युवान ने क्या कहा? मुझे यूट्यूब वीडियो में आने दो, सुन लो उसकी बात. ऐसे मेरे कुछ I didn't something like that. Yes guys, something like that. But still I want to watch his gameplay. That's why I'm here. ओके गाइस तो चलो चलते हैं. मैं विरेडियन की जिम में पहुंच चुका था. युवान मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ओके तुम हिंदी में बात करो. ठीक है रे बाबा. अब इस गधे लाइसेंडर को दोबारा हराएंगे गाइस. और क्या लगता है अपना फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन क्या इसके घटिया पोकेमॉन को हरा पाएंगे? भाई साहब दाढ़ी बहुत ही अजीब लगता है. हाँ उसका पहला पोकेमॉन था एक टूटनेटर, तो मैंने उसे एक सर्फ. ओके तो गाइस उसका अगला पोकेमॉन था एक कैमरअप, तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली भाई. और भाई हाँ बराबर. तो उसके ऊपर एक सर्फ मारने पर शायद कम हो गया. युवान फाट की आवाज निकालना बंद कर. Excuse me, can you please not talk to me like that? अबे तू फाट की आवाज निकाल रहा है. गाइस ये कौन सी अच्छी बात है? बताओ मुझे, बताओ ना, कोई बताएगा मुझे? अबे इस गधेड़े लाइसेंडर को कोई बोलेगा कि हाइपर पोशन यूज करना बंद करे. युवान बोल दे इसे जरा. Get lost you bloody. Yes you did it. अबे यार ब्लडी यूज करने नहीं बोला था. कैसा बंदा है देखो. रुको. अबे स्लैजल होता है वो, स्लैजल नहीं. स्लैजल नहीं. अरे I was just saying that word and you are correcting me. तो गाइस फिर मैं गया विक्ट्री. After sweeping LT Surge once more, then I captured a Charizard over here, which was a super cool addition to the team. Guys, after coming here, I noticed that Lorelai is not there. But यार मेरा इतना सारा टाइम मैं खाली नहीं जाने दूंगा और सेवी आइलैंड्स का पार्ट तो मैं खेलने नहीं वाला. तो मैं ये करता हूँ, वॉक थ्रू वर्ल्ड्स चीट. एंड या फिर मैं चार्जर को आगे रख के लॉरेलाई से बैटल शुरू कर. तो भाई हम दोनों में बैटल शुरू होता है. लॉरेलाई का पहला पोकेमॉन एक वॉर टर्टल होता है सरप्राइज. तो भाई मजबूरन मुझे क्विल में स्विच करना पड़ता है और थोड़ा बहुत डैमेज तो खाना पड़ता है, ऐसा लगा था मुझे. पर
वो भाई कुछ और ही है। आयरन डिफेंस कर लेता है और फिर भाई एक लीफ ब्लेड से उसका खेल खत्म। लॉरेलाई का अगला पोकेमॉन नॉकडाउन होता है। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था उससे काफ़ी अलग है ये, पर जो भी है। और हाँ गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग पेन इन दी एस है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। जिसने भी फायर टाइप ये किया है ना, मतलब फ्लाइंग टाइप, उसको पता है कि लॉरेलाई पेन इन दी एस ही होती है। एंड आई न्यू दैट फुल रिस्टोर आने वाला था, तो मैं अपना इन्फर्नो मार देता हूँ उसके ऊपर अगला वाला। और यार ये बर्न हो जाता है एक और बार, और उसकी बर्न डैमेज उसी को टेक डाउन करने वाला होता है। मैं एक विंग अटैक मार के खेल खत्म कर देता। फिर भाई आता है अज़ूमैरिल, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये लॉरेलाई के पास होगा भी, तो मैं एक और लीफ ब्लेड मार के उसका खेल सफ़ा चट कर देता हूँ गाइस। अगला पोकेमॉन होता है स्लो किंग, जिसके लिए मुझे लग रहा होता है कि ये साइकिक टाइप भी है तो थोड़ा बहुत और डैमेज भी लेगा, पर नहीं यार, सरप्राइजिंगली इसमें ही चला जाता है। और फिर आता है लॉरेलाई का एपॉम। भाई ये कैसी टीम रख रहे हो यार तुम, कुछ ढंग की तो रखो यार। एक एलीट फोर है तो वो एक ही टाइप का पोकेमॉन लेगा ना। फाइनली गाइस मैं एपॉम को हरा देता, पहुंच जाता हूँ ब्रूनो तक। एक मुसीबत से निकला नहीं, दूसरे में पहुंच गया। ब्रूनो का पहला पोकेमॉन होता है एक नॉकडाउन। मतलब यार मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, पर फिर भी यार आई थिंक ये फाइटिंग टाइप होगा। एंड एज आई प्रेडिक्टेड, बिकॉज ये येलो हेल्थ में चला जाता है। और फिर आउट ऑफ ईयर फिर आता है ऑनिक्स। गाइस फिर फुटेज एरर की वजह से मैं बची हुई बैटल दिखाई नहीं पाता, और यार मैं ऐसे ही ब्रूनो को हरा देता हूँ। फिर आता है एक ऐसा मोड जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, बिकॉज भाई आगेता के लिए मेरे पास एक भी डार्क टाइप मूव नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ। पर मुझे लग रहा होता है कि ये डार्क टाइप्स क्या अभी घोस्ट टाइप ही यूज़ करेगी, पर यार इसका पहला ही पोकेमॉन एक क्रेडिल ही होता है, तो फिर मैं हरा देता हूँ उसके एनोरिथ को भी, जिसके लिए मुझे पछतावा नहीं होता। और फिर आता है गैंगर, जिसके लिए मैं बहुत डरता हूँ, और वो फाइनली मेगा इवॉल्व हो जाता है। और फिर मैं ब्रीफ बर्ड से किस्सा ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और कर भी पाता हूँ आई गेस, याद नहीं आ रहा यार अब। फिर वो आता है उसका नॉकडाउन। भाई हर एक एलिफ फोर के पास नॉकडाउन है। नहीं, फिर मुझे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन लाना चाहिए था यार, ये क्या कर दिया मैंने। फिर आता है मिस्ट्रीवस, और मैं उसे भी एक ब्रेव वर्ड में ख़त्म कर देता हूँ। तो आगे था तो यही हुई हार। और अब हम जाते हैं लैंड्स की तरफ। चलो लैंड्स की तरफ जाते समय मैं बिना हीलिंग आइटम्स के यहाँ आया हूँ गाइस, वैसे बिकॉज मैं बैटल में आइटम्स यूज़ नहीं कर सकता, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, मतलब कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं जीत जाऊँ। और भाई मैं जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था, सॉरी। उसके दो पोकेमॉन को हराने के बाद उसके फ्लाइगॉन की बारी आती है, जो कि सैंडस्टॉर्म यूज़ कर देता है, जिसके खिलाफ भाई डर तो लगना ही है, बिकॉज फ्लाइगॉन एक तो वो सूडो लेजेंडरी है, वो एक हुआ, और दूसरा भाई आप लोग जानते हो ग्राउंड टाइप भी है, बहुत डर लगता है यार। फिर आता है ड्रैगनाइट। और फिर गाइस मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड गाइस बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने एल्टी सर्च को हरा दिया, और यार मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके पोकेमॉन 95 लेवल के थे। तो यार यही एंड होता है अपना फ्लाइंग टाइप चैलेंज। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई ये चैलेंज वीडियो करने में मुझे बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताओ। तो चलो हम लोग फाइनल जीत हासिल करते हैं हॉल ऑफ फेम में। तो ये हमारे 6 के 6 पोकेमॉन जो एंड तक हमारे, और भाई देख सकते हो 2 पोकेमॉन को हम लोग मिमिक क्यों हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। तो भाई गेम होती है यहीं पे ख़त्म। तो टिल